ओके गुड आफ्टरनून टू ऑल प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़ी कौन ना ली चाटलियर्स प्रिंसिपल देन आरएनएस इक्वेशन आरएनएस इक्वेशन रे एसिड बेस को हमें कौन करथिले सेपरेट करथिले वर्तमान सेम थिंग आरएनएस इक्वेशन रे कौन कहिथिले था प्रीवियस क्लास रे कौन कही और कॉन्सेप्ट कौन कही एसिड्स आर द substance which ionizes आयोन एटा प्रीवियस क्लास रे पढ़ाई बर्तमान टिके मु कहि दउची एलाबोरेट कर दउची तापर नेक्स्ट क्लास जीवा ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी आयोनाइजेस पार्शियली और completely in a water or aqueous medium or aqueous medium which gives hydrogen ion H plus. This is acid. According to RNS equation, we already discussed about that matter. Means like that, acids are the substance which ionizes partially or completely in a water or aqueous medium, which gives hydrogen ion or H plus. एसिड गोटे एमतीका जिनस से पानी सहित किंबा जेकोसी गोटे सॉल्वेंट सहित एक्यूस मीडियम रे मिसला मात्रा के से अल्प मिसु किंबा कंप्लीटली मिसी जाऊ मिसवा पर कौन दिए ना हाइड्रोजन आयन दिए ओके हाइड्रोजन आयन किंबा H plus in case of acid if you are talking about only base then that definition will become bases are the substance which ionizes partially or completely in water or aqueous medium which gives hydroxyl ion or OH minus okay. According to RNS, we already discussed about acid and base. Now we have to start Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept. See here, Bronsted-Lowry concept. In 1923
Bronsted and Lowry separately proposed a theory is known as Bronsted-Lowry concept. Bronsted-Lowry concept कौन कहले? In 1923, Bronsted and Lowry separately proposed a theory is known as Bronsted-Lowry theory or concept. Okay? According to Bronsted-Lowry concept, what is acid, what is base, we have to see here. एसिड्स आम देखा एसिड कौन एसिड्स आर those compound acids are those compound or species or species which have tendency to give which have a tendency to give or donate of electron acids are those compounds or species which have tendency to give or donate of electron to any solvent by any method acids are those compounds or species which have a tendency to give or donate of electron to any solvent by any method. Okay? Then आम देखा कौटा एसिड कौटा बेस जेहेतु आम एसिड पढ़ुं बर्तमान तार एग्जांपल देखा एग्जांपल कौन ना HCl H2SO4 then HF
HCO3 माइनस और HSO4 माइनस। ओके आउटा कौन लिखिपर CH3COOH मध्य लिखिपर। ओके देन इटा गला एसिड। सिमिलरली आम पुणी बेस भी देखा। बेस कौन बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेल लोरी थ्योरी कौन कहले ना बेस आर दोज compounds or species which have that tendency to accept of electron in a solvent in any solvent by any methods। बेस क्या कहबे अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो कंपाउंड किंबा स्पेसीस रो गोटे टेंडेंसी थी से गोटे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवार कोठी ना सॉल्यूशन भितर गोटे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवार कैपेसिटी जो कंपाउंड रो किंबा स्पेसीस रो थिबो बाय एनी मेथड्स जे कोनोसी मेथड रे गोटे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवो अर्थात गोटे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करिवार जो कैपेसिटी अछि जे कोनोसी कंपाउंड किंबा स्पेसीस रो गोटे सॉल्यूशन रे ताकू कहबा बेस बोली अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। देन एग्जांपल कौन देखिबा NaOH BaOH रो होल 2 देन KOH HSO4 माइनस HCO3 माइनस। क्वेश्चन आछि कोन या पूर्वर एसिड रे थिला HSO4 माइनस HCO3 एसिड रे थिला एठी भी अछि। तो आमे देखिबा जदि इन केस ऑफ एसिड रे देखिबा जदि हाइड्रोजनटा ये लॉस करिवो अर्थात डोनेट कर देबो कोन हबो SO4 2 माइनस एसिड रे इटा कोन हबो एसिड रे पुनी H टा डोनेट कर साला परे CO3 2 माइनस। ओके इटा होची एसिड रे। बेस रे कोन हबो ना इटा हबो SO4 सॉरी एटी मेंशन कर दूची देखि दियो एसिड रे कोन हबो HSO4 minus converted to H टा प्लस हो अर्थात डोनेट हो सारा बाहरी गला परे H प्लस टा बाहरी गला परे अर्थात H टा बाहरी गला परे H प्लस हो अर्थात कौन हम
SO4 2 minus. Okay, then HCO3 minus এটা কনভর্ট হয়ে যাব কোন না হাইড্রোজেন যেটা প্রোটনটা লস হয়ে পড়লে H প্লসটা লস হইলা পরে কোন হবো CO3 মাইনস। ওকে, তো আমি দেখুছন্তি এইটি CO3 মাইনস এটি 2 প্লস দেখিপারছ, এইটি SO4 2 মাইনস, সিমিলারলি CO3 2 মাইনস। ওকে, এটা গলা এসিড রে, দেন বেস রে কোন আসিব, বেস রে HSO4 minus converges to H2SO4 H2SO4 okay, then এটা কোন accept কলা বুঝি হচ্ছে 1 proton accept কলা সেইপাই H2, then HCO3 minus converted to H2CO3 okay, এটি কোন হয়েছে না ये हाइड्रोजन लॉस करछि CO3 2 माइनस, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करछि मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्ट करछि, एटी प्रोटॉन लॉस करछि। तो ये क्षेत्र में देखि पाइले हाइड्रोजन CO3 HCO3 H2 CO3 ओके, देन आम आरंभ करिबा conjugate acid base concept, conjugate acid base concept, conjugate acid base concept कौन always pair of acid base conjugate present सब गुड़ा कौन थी गोटे पेयर ऑफ एसिड बेस थी बुझी होची कौन ना कंजुगेट ऑफ एसिड बेस रे ओके, देन देखिबा हमें जदि आम ये नवा HCl ओके प्लस HCO3 माइनस कौन हम HCl टा कौन एसिड एटा हला बेस टू फॉर्म Cl माइनस प्लस H2CO3 ओके प्लस एटा हला बेस एटा हला एसिड ओके, आमे देखुचंती
क्लोरीन HCl गोटे एसिड ये एसिड रे डोनेट करिवो कोन डोनेट करिवो कोटा ना गोटे प्रोटॉन एसिड गोटे डोनेट करे प्रोटॉन कला परे एसिडटा हो गला बेस Cl HCl टा कन्वर्ट है कौटी की ना क्लोरीन माइनस ओके देन HCl डोनेट कला प्रोटॉन टू बेस HCO3 माइनस कन्वर्ट टू H2CO3 plus that's why it is a acid okay same thing if you are going to see mechanism okay mechanism how to form HCl okay hydrogen bond chlorine chlorine contain 3 pair of electrons chlorine contain 3 pairs of electrons that means one pair 2 pair 3 pair okay but chlorine here donate 1 electron for bonding hydrogen also giving 1 electron that is called a bond because of 2 electrons are cooperate of chlorine and hydrogen to form a bond okay after that okay that a total electron means a pair of electron comes to near chlorine okay that means hydrogen already lost or donate 1 electron this is hydrogen electron okay so that's why hydrogen donate 1 electron means this electron was donated by hydrogen so donate means H plus okay this electron of hydrogen comes to chlorine okay so that's why plus chlorine having 3 pair of electrons 1 2 3 4 this electron pair comes to this place okay so that's why H plus Cl minus because of chlorine accept 1 electron from this electron टा कहार हाइड्रोजन so chlorine accept 1 electron from hydrogen so that's why chlorine is minus hydrogen donate 1 electron to chlorine so that's why chlorine is minus hydrogen donate 1 electron to chlorine so that's why hydrogen is plus so that's why H plus is a acid H plus is a acid because of hydrogen donate 1 electron to chlorine and chlorine accept 1 electron from hydrogen so hydrogen is a plus and chlorine is a minus so that's why chlorine is base okay then we have to start that many more examples of conjugate base acid base pair see here
examples of conjugate acid base pair. Okay, then we have to start HCl. इथरे मध्य एसिड अच्छी बेस भी अच्छी देखा HCl गोटे एसिड converges to Cl minus because of HCl is acid convert है base को. Okay, then H2SO4 converted to HSO4 minus. Okay, then HSO4 minus to converges to आम नौ एसिड रे. ओके, HSO4 कॉमन अच्छी एसिड रे भी अच्छी बेस रे भी अच्छी आम ये सब देखुचे एसिड रे. तो कौन नवा HSO4 2 माइनस. ओके, सिमिलरली HCO3 माइनस converges to CO3 2 minus. This is acid, this is base. This is acid, this is base. Because of I already told you HSO4 minus is acid, HSO4 minus is a base, HCO3 minus is acid, HCO3 minus is a base. फास्ट मु एसिड को बेस रे कन्वर्ट कली पुणी बेस टाकू एसिड रे कन्वर्ट करी HSO4 माइनस कन्वर्जेस टू H2SO4. ओके, देन HCO3 converges to H2CO3. okay, base acid okay. Then we have to start nature of water or nature of solvent. Nature of water. Nature of water कौन? The nature of water is
amphiprotic nature. Okay, amphiprotic. Amphiprotic sometimes acid, sometimes base. Okay, amphiprotic nature of water ता माने वाटर जो नेचर अच्छी केतेबेले सेटा देखौछि कोन ना एसिड, केतेबेले देखौछि बेस. ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट वन एग्जांपल. कोन HCl प्लस वाटर. ओके, HCl टा कोन एसिड, H2O टा कोन बेस, converges to Cl minus plus H3O. Cl minus converges to H3O plus. It is a base, it is a acid. Okay, how can see? HCl donate one proton, converges to Cl minus, that is base. H2O receive or accept one proton from HCl to get H3O plus. Okay, means we got base and acid, but don't forget which compound or species donate one proton or proton in a solvent in any methods, that is called acid. Which compound or substance or species have that tendency to accept one electrons or electron to any solvent by any methods to form a base. Then acid base means when nature of water is amphiprotic, sometimes acid, sometimes base. So that's why it is a good example for that. Amphiprotic means acid base combine to form base and acid. Like that, when HCl before this side, HCl is a acid, but HCl donate of one proton to give Cl minus. Okay, that is a base. Then H2O receive or accept one proton from HCl to give H3O plus, this is a acid. So amphiprotic nature of water in Bronsted-Lowry concept we already studied. Then another example, now we have to see. NH3 plus H2O, it is a base. Okay,
converted to NH4 plus OH minus. Okay, it is a base, it is a acid. Okay, then we already got what is acid, what is base, what is the conjugate base of concept of conjugate base, and examples of conjugate base, acid or acid base. Then there are advantages and disadvantages we have to see. Advantages. It can explain acid base are in any solvent. Okay. Then second one, it can explain the stability of proton. Stability of a proton means H plus. जे कौन सॉल्वेंट रे एसिड बेस ता शो करि पारे, जे कौन सॉल्वेंट रे एसिड बेस शो करि पारे, इटा ब्रोंस्टेड लॉ रे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करि पारे. ओके, ये मध्य एक्सप्लेन करि पारे. सेकंड थिंग कोटा ना स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन H plus. Acid base is the main function of acid and base is proton, donate or accept, that is acid and base. But if donation of one proton to any compound or any molecules, whatever may be, that tendency is called acid tendency. Which compound or species have that tendency to accept or receive, that is called base tendency. Okay, then advantages देखिले. then next disadvantages. It cannot explain the acid base where absence of proton, example SO2, SO3.
it cannot explain. Acid means which substance donate electron, or which substance donate proton is called acid. Which substance accept proton is called base. So that's why without acid and base or proton, nothing like that Bronsted-Lowry concept. So that's why without proton loss or gain or donate or accept, acid base not possible. Okay, we can't find out. Without proton we can't find out what is acid, what is base. So that's why it can't explain the acid base where absence of proton. जदि proton नथिबो तो आम जानिबा केमती कोटा एसिड कोटा बेस according to Bronsted-Lowry concept. Okay, next class we have to see Lewis theory. Okay, thank you.